सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो हमारी हेयर की शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, पहले वो देख सकते हैं। इसके बाद ये वीडियो देखिए तो ज़्यादा समझ आएगा। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले फेस शेडिंग की। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आईब्रोज और आइज से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, आइज को सबसे पहले ड्रॉ करने का फ़ायदा ये होता है कि उसके बाद हमें एक सबसे डार्क वैल्यू मिल जाती है। सो अब जब हमें फेस ड्रॉ करना है तो हम उसको उस डार्क से कंपेयर करके देख सकते हैं कि उसको कितना वाइट या कितना डार्क करना है। कभी कभी अगर पहले हमने फेस ड्रॉ कर लिया तो समझ नहीं आता कि उसको कितना डार्क या लाइट करना है। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले सबसे डार्क पार्ट है जो वो ड्रॉ कर लो, तो उसके बाद उससे कंपेयर करते करते हम फेस बनाएंगे। तो अभी आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि कोई दूसरा आर्टिस्ट है जिसको आप देख रहे हो, वो पहले फोरहेड ड्रॉ कर रहा है, उसके बाद वहाँ से नीचे जा रहा है। तो इसमें सबका अलग तरीका होता है। मैंने सब ट्राई करके देखा, मुझे सबसे इजी यही लगा, तो मैं इसी के साथ जाता हूँ। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द फोरहेड। सबसे पहले यहाँ पर हम बेस लेयर दे देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कहाँ कहाँ शैडोज है, उसके हिसाब से उसको डार्क कर देंगे। ओके, सो हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये जो पार्ट है वो थोड़ा राउंड होता है। तो जब भी हम इसको शेड करते हैं वो डार्क से लाइट होना चाहिए। सो हमें यहाँ राउंडनेस वाला फील आना चाहिए।
ओके, सो यहाँ पर लिप्स की बात कर लेते हैं। तो जब हम लिप्स ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि उसका जो आउटलाइन है उसको हम ज़्यादा डार्क ना कर दें। जो बिगिनर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी यही मिस्टेक होती है कि वो लिप्स में आउटलाइन बना देते हैं। इससे ऐसा लगता है कि लिप्स है उसको अलग से लगा हुआ है। जो लिप्स है वो फेस का पार्ट है, तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसको अलग से लगा हुआ है। जब स्किन बना है तो स्किन और लिप्स दोनों मैच हो जानी चाहिए। सो एंड में अभी कुछ बाल बचे उसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मैंने लास्ट तक इसीलिए रखा क्योंकि अगर इसको मैं पहले बना देता तो उसका जो ग्रेफाइट है वो फेस शेडिंग करते टाइम फैल जाता। सो इससे अच्छा है कि इसको लास्ट में रखे तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।